Hello and welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers. Vikas Joshi inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है. ये एक कोशिश है. This is an effort so as to improve on your self development, on your self confidence. Before we begin with today's topic, friends, I appeal to all of you that if you love this series, please like, share, and subscribe as it motivates me to create more such content. So, the today's topic is, friends, stay innovative. It's the lifeline of the growth. So, welcome, friends, to the world where ideas rule. The change is only constant and adaptability is survival, है ना? If you are accepting the changes, there are two ways. एक जो है वैसे ही चलने दो, तो जिंदगी ऐसे ही आए गए चल दिए. लेकिन एक है जो चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव लाना, कुछ नया सोचना, and that gives you the growth. So, in today's episode, let's talk about one of the most vital traits of personal and professional success. Yes, this important point is that it helps you to develop yourself both personally and professionally. That is staying innovative. Innovation is not just about inventing. नहीं when the flying cars आ गया और coding next unicorn startup, and that is not innovation. That is something you are creative. I do agree with that. It's about constantly evolving your thoughts, questioning the usual and refusing to settle for the stale. जैसा आ रहा है वैसे ही चलने दे. नहीं, कुछ नया सोच है, कुछ नया चाहिए, कुछ फास्ट चाहिए, और जिंदगी तभी बन जाती है. एंड यू विल एग्री टू दिस. Just go 10 to 15 years back in your own life and see the changes that you have made in your life. If not, then it's time that we have to rethink about how you are proceeding in your life. So innovation begins where comfort ends. जैसे आ रहा था वो चल रहा था, आराम गैराम बैठे हैं, तो ग्रोथ नहीं हो रही है. जिंदगी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ग्रोथ नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है. ना मैं तो ऐसा हैप्पी रहता हूं, तो सपने नहीं है. अगर सपने ही नहीं है तो ग्रोथ कहां से होगी? नहीं होगी, क्योंकि सपनों के साथ ही जीना है, लेकिन कुछ नया सोच के जीना है. And that's exactly where growth begins, friends. So, staying innovative, it means that it is an art of doing things differently. वही चीज है लेकिन कुछ नई सोच के साथ, एंड मोर इफेक्टिवली. मतलब अगर मान लो अभी देखो हर के घर में पीसी आ गया, अभी मोबाइल हाथ में आ गया, so everything is available at the fingertip. Now, if you are following the old method of jotting down in a notebook and pen and pencil and all those things, then no doubt it is the best method, but it is time consuming. When you are having the iPad or when you are having the keyboard at your fingertips, why not jot it down on your laptop, on your PC, on your mobile? Important points आप लिख ही सकते हो. So why not? So that is innovation. That is where you are doing the same thing but differently. It is helping you to, सर इसमें क्या फर्क पड़ने वाला? अरे फर्क बहुत पड़ेगा. टाइम से हो गया था आपका, टाइम से हो गया आपका, कंसंट्रेशन फोकस्ड अप्रोच बढ़ गया. वही समय अब आप अपने क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. इट्स नॉट ऑलवेज फ्लैशी और बिग. है मेरे पास तो मैं दिखाना चाहता हूं. इट इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट, बिकॉज इट्स योर लाइफ. यू आर क्रिएटिंग इट विद इनोवेटिव थॉट्स. अच्छी चीजें चाहिए तो सोच भी बदलनी पड़ेगी ना. पुरातन काल से समय ऐसे आ रहे हैं, सभी चीजें वैसे ही चलती रही तो कैसे लगेगा आपको? सिंपल, जस्ट वॉच द हिंदी फिल्म्स और एनी फिल्म्स, आई शुड से दैट. See how they have developed themselves.
Everything has changed. Now you love the cinematography, the songs, the music, all has changed. पुराने काल के जमाने से अगर चलता रहता तो no, we would not be so much happy of spending much amount of time over them, correct? Similarly, it's for life, friends. Sometimes it's as simple as tweaking your daily routine, changing your approach to relationships, or reimagining the way you run your business. बस थोड़ा सा बदलाव लाना है और हमें ये देखना है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर नॉट मूविंग एट ऑल, कुछ सपने देखे ही नहीं है. अब बिजनेस क्या मेरे पिताजी ने चालू किया तो इट इज फ्रॉम माय ग्रेट ग्रैंडफादर्स दैट आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस. ओह, and you are running in the same fashion, same old way. When the others are moving ahead of you, now you are lagging behind in the same scenario. So you will have to be thinking differently. So to stay innovative means to keep your mind open like the sky, to constantly absorb or observe and act. ना ऊपर देखिए आसमान गगन अरे पूरा खुला है, इसीलिए कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट. So you can have the thoughts only if you have open mind, so that you can absorb new things, observe the new things. It means that like being curious like a child, bold like a rebel, and strategic like a chess master. So the chess player जो है, he is always thinking 2 moves ahead. He has that plans. I'm just stating 2 moves. It may be more than that, but he's focused. His act is that some new thing should be done so that he can win the earlier way. Correct? So you have to have the innovative methods. So innovation is a mindset. It is not a milestone. नहीं तो मेरा पास तो है मैंने ऐसा नहीं. It's okay. You are having the skills. We do agree with that. But if it is not helping yourself to grow, to develop, to enhance your self-confidence, then there is a problem with it. Correct? So it's something that you nurture, not something that you reach. नहीं पहुंचना नहीं है, ये हमें चलते रहना चाहिए. Innovation is a process which is an ongoing process. ये कभी रुकेगी नहीं ना. So let's be real. The world today doesn't wait for anyone. ये तो सही है ना, वो कभी भी नहीं रुका है. Nobody waits for anyone. The only thing moving faster than technology is our attention span. देरी से देखोगे तो देरी समझ में आएगा, जल्दी देख पाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे. See, when you are creative, when you are innovative, your brain starts working in the same fashion. And you cannot afford to lose that time. So businesses that don't innovate, they fade away. नहीं टिक पाते हैं. इतनी इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं. So people who resist the change, they become irrelevant. You see, whenever in our discussions also, if somebody is adamant, then what we do? We start ignoring him, or we start telling that he is very adamant, that he is not agreeing to things. New approaches. But the people who are not appreciating the new approaches, they cannot grow. They will not allow others also to grow. That is the problem. So you should be away from such people who are in their comfort zones, who don't wish to change when the whole world is changing around them. It is applying to all, whether you are running a company, building a career, managing your personal life. If you are not innovating, then where are you going? You are going to stagnation. You cannot have this peace of mind also. देखो, the best example I can give is about think of the companies like Nokia or Kodak, वो फोटो वाली कंपनी, कैमरा रोल हम डेवलप करने के लिए देते थे. अब कहाँ है? अभी everything is on your mobile. You don't even require a reel to develop or a laboratory to develop for. It has become outdated.
Why they lose to the competition? Because they were in their own comfort zones. एक समय ऐसा था जब कैमरा फोटोग्राफी और डेवलपमेंट ऑफ रोल ये वगैरह वगैरह, दे वर सम कंसिडर टू बी इंडिस्पेंसिबल, और एक मोबाइल आ गया कैमरा के साथ, सब खत्म. सो दैट इज हाउ इनोवेशन प्लेज द रोल फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, एप्पल हैज चेंज द कंप्यूटर्स. पहले ऐसा था कि बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, लैपटॉप लैपटॉप में प्रोसेस ही नहीं थे, ये कोई था ही नहीं. बड़ा कंप्यूटर कंज्यूमिंग मोर ऑफ योर स्पेस. अभी एक छोटे से चिप में अब टैब पीसी लेके जा रहे हो, टैब लेके जा रहे हो टुवर्ड्स योर मीट्स आल्सो, है ना. सो दैट इज इनोवेशन. सो व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ इज, आर यू कोस्टिंग और आर यू क्रिएटिंग? आप एक जगह पे बैठना चाहते हो कि कुछ क्रिएशन भी चल रहा है आपकी जिंदगी में? दैट इज व्हाट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. द इनोवेटिव माइंडसेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ फ्रेंड्स. सो स्टेइंग इनोवेटिव डजंट रिक्वायर टू बी जीनियस. नहीं नहीं, वो उसकी जरूरत ही नहीं. बस सिंपल थॉट्स, बट यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. What it requires is a defined mindset and a discipline. So how can you say that you can become naturally innovative? Because if you are curious, if you are having a curiosity, you will ask questions like why, what, why not. Then you are refusing to take anything at its face value. So that is the change. Resilience is not an idea of works, but every failure teaches. Fall, learn, tweak, repeat. That is resilience. So every time you are improving on yourself, it is because you are curious about yourself, your actions. So it means that you have to be able to take risk on what has been done till now. है ना, हम ये सुनते हैं अभी तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. ठीक है ना, नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ करोगे ही नहीं तो बढ़ोगे कैसे? सो दैट इज हाउ द चेंजेस आर हैपनिंग. सो दैट रिक्वायर्स गट्स. अपने इनर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तो आप बढ़ पाओगे ना. सो यू हैव टू रीड, एक्सप्लोर, अनलर्न, रीलर्न. द ब्रेन इज अ मसल, यू हैव टू ट्रेन इट. You cannot allow it to go into the comfort zone. No. Fresh ideas emerge when different people come together. There's diverse minds. When they are together, fresh ideas come. So don't isolate yourself, or don't even become a member of the stagnant group who is busy big biting or biting others or backbiting others. Everything. That is wastage of time. But the people who are innovative, they will always think of something new that will help you to grow along with them. So that is important, friends, because you are refusing to go into your comfort zone. So innovators are not the lone wolves. They are connected learners. They think big, act fast, and bounce back faster. They refuse to give up. You can innovate how to cook, how to plan your finances, how to exercise, how to deal with your emotions. ये सब आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड सोच होनी चाहिए. अगर आप किसी इमोशन में अटक के बैठ गए, now you are moving towards stagnancy and you are not allowing yourself to explore your own skills, your own potential. You are having it. कैसे पता चलेगा आपके पास स्किल है कि नहीं है? जब कोई प्रॉब्लम आएगा तभी तो समझ में आने वाला है. नहीं तो कैसे, how are you going to know whether you are having that particular skill or not? You see, every problem has a solution. But if you sit harping on the problem, then there is no solution. So don't harp on the problems. Find the answers. That is curiosity. So start small. Change the route you walk. एक simple. जैसे हम बोलते हैं कि I start walking in a garden. Okay. Now you walk on the road. Observing others. ये भी हो सकता है. मतलब रास्ते के बीच में नहीं. That's just an example giving. एक छोटा सा चेंज करना है आपके रूटीन में.
सो जो आपने कभी पढ़ा नहीं वो पढ़ लीजिए। जैसे न्यूज़पेपर आता है लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं आजकल। आजकल तो फिजिकल न्यूज़पेपर बहुत कम लोग लेते होंगे क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल ऑन द पीसी या नेट नेट पे है या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। बट आर यू रीडिंग? यू हैव टू फॉर्म द हैबिट ऑफ रीडिंग। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो प्लीज लीजिए, एक न्यूज़पेपर लेना एक, लेकिन पढ़ना। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सोशल मीडिया पे हम पढ़ते नहीं है, हम देखते हैं। वी ऑब्जर्व इट एज जस्ट अ मूवी and then start commenting. And then we are more interested in the comments than the news. So it is not helping you to grow. We are going backwards. So you are to automate your tasks, declutter your phone, create a new family ritual. So you if you make these changes, it's a miraculous change. So this innovativeness will turn your routine into magic. So why not do it today than wait for something? So, in your career, innovation might mean learning, automating reports, or finding better ways to pitch ideas. If you are business owners, staying innovative is survival. Think, can your product evolve? हो सकता है क्या? Can your service get smarter? Can your team become more agile? Innovation is not a cost, it's an investment in relevance. ये होगा कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं तो कैसे करना चाहिए. So it has got the relevance to your activity. And no, you don't have to invent the next iPhone. उसकी जरूरत नहीं है. Just removing the customer pain point is revolutionary. अब देखिए अगर ये एक छोटा सा एग्जांपल घर घर की बात है, जो एल्डर्स है उनको मोबाइल यूज करना नहीं आता है, नाउ एक रहेगा कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, आई विल नॉट प्रेफर दैट व्हाट्सएप एंड ऑल द सोशल मीडिया, मुझे मेरे पास फोन में हेलो हेलो कर सकता हूँ उतना ही ठीक है. अदर he might inquire with the younger generation कि ये कैसे इस्तेमाल करता है, what is the utility, how we can learn about it, how I can save my time. So the other will grow. The first person who has differed in these ideas, in the innovations, will move towards stagnancy. That's of no use, friends. So the challenge is saying that innovation नहीं कर सकता, बहुत difficult है. क्योंकि any changes, it requires your mindset to change first. So let us not sugarcoat it. Staying innovative is very hard because you have to change your mindset first. There is a fear of failure also, ना. There is resistance from others. ये क्या नया है, ये क्यों करना है तुमको. ये आम तौर के सवाल आते हैं जो अपने घर घर की बात है. अगर आप कुछ नया कुछ करोगे तो अपने घर वाले ही सब पूछने चालू करेंगे, इसकी क्या जरूरत है, इतना क्यों करना है, why are you wasting your time. All these is good, but once you have decided to come out of your comfort zone, to move forward, to jump forward, innovation is the only way and you have to stay on the path. ये सारे सवाल आते रहेंगे फ्रेंड्स, यू हैव टू ये रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, फटीग आएगा. सो डिस्कम्फर्ट इज द साइन पोस्ट ऑफ इनोवेशन. अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो मतलब यह है कुछ नया चेंजेस हो रहा है. द ब्रेन लव्स पैटर्न्स एंड शॉर्टकट्स. जल्दी जल्दी मिल जाए तो अच्छा है. सो व्हेन यू पुश फॉर समथिंग न्यू इट रेजिस्ट. पहले ना बोलेगा, आप नहीं नहीं रे इतना बहुत कौन करेगा. सिंपल है. जिन लोगों को पहले से किताब और लिखने की आदत है, आजकल मोबाइल या पीसी पे उन्होंने काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको. दे आर नॉट यूज्ड टू दिस चेंजेस. So you have to fight your comfort, instinct, and curiosity, and encourage yourself to move on. So innovation also takes time and patience. क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा ना. जैसे मैंने कहा, अगर आप लोगों को किताबों में लिखने की आदत है, अब अगर अचानक पीसी पे बैठ जाओगे तो आपको ये आदत डालनी पड़ेगी. So the results are not immediate, but they are always worth it. So innovation is the necessity engine to keep your life on the growth path.
path. So you have to keep a journal, jot down the odd ideas, questions, patterns, frustrations. They are seeds of innovation. So expose yourself to different fields. Talk to people outside your circle, different backgrounds, different ways of thinking. नई नई सोच आएगी. Take breaks. Boredom isn't bad. It's brain fertilizer. That's when ideas sneak in. शांति से बैठो कुछ नया आएगा दिमाग में. Your brain doesn't sit idle. करके देखना. कुछ नई सोच चलती ही रहती है. Do one new thing every week. Form a habit of it. Call it as it is your own innovation challenge. करना ही है. So friends, make innovation your way of life. To stay innovative, it is to stay alive, aware, awake in the world that often wants you to stay small and safe. It's not about perfection, it's about progression. हम कहते हैं ना कि नजर लग गई मेरे इसको, उसको वो नहीं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं. ये आमतौर पे हमारे फेलियर्स हम किसी और पे ब्लेम कर देते हैं. ये घर घर की बात है. सोचा था कि क्या तुमने उस फोर्स से काम किया था कि नहीं? ऐसे किसी किसी और के सोच से तुम्हारा काम बिगड़ रहा है. Why are you not focused? Why are you not innovative? Why are you not thinking about yourself, of your future, of your growth? अगर ये कंसंट्रेशन से करोगे तो हो ही नहीं सकता कि कोई कुछ और सोचे और तुम्हारा काम बिगड़ जाए. So if you keep your mind open, your heart brave, and your spirit playful, innovation will find you. आएगा. आपके पास खुद चल के आएगा. Not once, but again and again. And now you will feel that this is what I want and this is how I'm growing, because you are feeling the growth. Confidence बढ़ रहा है आपका. So the world may not be that you are moving forwards, may not be thinking on that part. But isn't it a good thing to start for your own world? Yes, it is a good thing, friends. So, friends, I sign off on this note and we meet again in another episode of Golden Whispers, because Joshi inspires aspirations. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.